Hello friends, so now we are talking about joins in SQL. तो joins mainly क्या रहता है? Inner join, left outer join, right outer join, full outer join, cross join and self join. ठीक है, ये joins होते हैं. So अभी mainly हम जैसे कि inner join की बात करें, suppose that is the my table, this is the my another things. So यहाँ पे जो भी common record display करेंगे यहाँ पे. So whenever we come to inner join, it show the common records only. Inner join. Inner join. Whenever we come to your left outer join, left का complete मतलब suppose the table name is T1 and T2. Entire table of the T1 and whatever the T2 match to this will be only show. तो इसको बोलते हैं सॉरी लेफ्ट आउटर जॉइन. लेफ्ट आउटर जॉइन. ठीक है. whenever we come to your right outer join, right outer join, राइट का कंप्लीट एंड वट एवर द लेफ्ट मैच दैट विल बी शो ओनली. तो ये होता है राइट आउटर जॉइन. वेन एवर वी कम टू फुल, इसको बोलते हैं राइट आउटर जॉइन. आउटर जॉइन फुल इफ वी थिंक अबाउट एंटायर, इवन वॉट एवर द मैच और नॉट मैच एवरीथिंग विल बी शो. इसको बोलते हैं फुल आउटर जॉइंस. So now we are talking about inner join. कैसे इसमें common record show करते हैं. Look at two tables are there like this thing. अच्छा, so suppose that is the first table is S1. This one is a O1. You can put it anything. O1 you can write this column order and this one is a suppose supplier. Supply. Okay. Common record की बात करें, 1 IBM 201 it will be matched 1 Pune, 2 TCS will be matched to Bangalore, 3 KPIT doesn't match to anything. These record will be not match anything, so record will be show 1 Pune to Bangalore only. That is the called inner join. So select table name is suppose supply. We needed to put supply dot star. Fine. Second table is name suppose order 1. Order 1 dot star. Fine. From table name. Table name is suppose say first table name is supply. Inner join. Inner join. That is the keyword. Order 1 on supply dot s underscore id. Second table name is order 1 dot oid. It will be show that records. जो भी कॉमन रिकॉर्ड होगा वो ये स्टार है यहाँ पे, ये रहता है. करेक्ट. ये ऐसे डिस्प्ले कराएगा. फाइन. ये इस ज्वाइंस को बोलते हैं इनर ज्वाइन. यू कैन नोट इट डाउन. हाउ द रिकॉर्ड विल बी शो विल डिस्कस. इनर ज्वाइन की जब बात हो रही थी
तो यहाँ पे देखो कॉमन रिकॉर्ड भी शो, कॉमन रिकॉर्ड बोले तो 1 2 1 2, दिस विल बी शो इन अ इनर जॉइन, है ना, जो कॉमन होगा। सपोज अभी हम लेफ्ट आउटर की ज्वाइंस की बात करते हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, कंप्लीट योर लेफ्ट टेबल, कंप्लीट इन द सेंस इट्स शोइंग योर एंटायर रिकॉर्ड, whenever we come to left, whatever the right in table, that will be whatever the match it will be shown. It will be show like this. Okay. अभी देखो इसकी कमांड लिखते हैं, कैसे ये इसकी कमांड लिखते हैं। राइट, सेलेक्ट, टेबल का नेम है फर्स्ट का सप्लाई, सप्लाई डॉट स्टार, ऑर्डर 1 डॉट स्टार, फाइन, देन फ्रॉम, टेबल का नाम है सप्लाई, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, order 1, on is a keyword where we are giving supply dot s underscore id, कौन से किससे क्या मैच कराने का, s id से हम o id को मैच करा रहे, so that's why we are writing order 1 dot o id. If syntax is properly we have written, check it out, output would be like this. Now we are talking about a right outer join, third is a right outer join, right outer join. इस बार सिंटेक्स चेंज कर रहे हैं, है ना, स्टार के जगह पे स्पेसिफिक कॉलम को, आप दैट थिंग्स वी कैन यूज इट विद द इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन. सो फर्स्ट वी आर राइटिंग select, table name is okay supplier, supply dot s underscore id, s underscore id, supply s underscore name, supply order okay supply dot as underscore from table name, table name is supply. देखो डॉट स्टार से अभी दे रहे हैं, अभी तुमने क्या किया, एक टेबल को डिस्प्ले कराया, अभी आपको लगा कि नहीं सेकेंड टेबल को भी डिस्प्ले कराने का, तो फर्स्ट विल गिव कॉमा, देन सेकेंड टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर 1 डॉट स्टार, ना डोंट गिव स्टार, स्टार बोले तो कंप्लीट, व्हेनेवर वी गिव द स्पेसिफिक कॉलम, तो एक एक कॉलम को, सपोज इस बार ओ आई डी, o underscore id, order 1 dot o location, o underscore date. Okay, first you needed to give column name, order 1 dot o underscore date. Then from table name, first table name is supply, supply
इस बार राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। सेकेंड टेबल नेम इज ऑर्डर 1, करेक्ट। इसके नीचे ऑन कीवर्ड इज अ मैंडेटरी, ऑन कीवर्ड इज मैंडेटरी। यहां पे आप क्या लिखोगे, सप्लाई डॉट s_id, ऑर्डर 1 डॉट void। सो दैट इज द कमांड फॉर द राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर में ऐसी टेबल्स डिस्प्ले होने वाली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फुल आउटर ज्वाइन। फुल में देखो तो रिकॉर्ड लाइक दिस 1 2 40 दिस एंड दिस, ओके फाइन। ये तुम्हारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा फुल आउटर ज्वाइन, मतलब कॉमन अनकॉमन बोथ। तो यहां पे देखो कमांड सेलेक्ट, टेबल का नाम क्या है, सप्लाई डॉट स्टार कॉमा ऑर्डर 1 डॉट स्टार, करेक्ट। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, सप्लाई इनर ज्वाइन, सॉरी आउट लेफ्ट, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड ऑर्डर 1, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिखा, फुल आउटर ज्वाइन ऑर्डर 1 डॉट, ये हो गया। ऑन इज अ कीवर्ड विच वी हैव टू रिमेंबर, ऑन, देन सप्लाई डॉट sid इक्वल्स टू ऑर्डर 1 डॉट void। You can note it down this command. This is the called full outer join. For more video, please like, subscribe and comment. And don't forget to share with your friends. Thank you for watching Lotus IT Hub YouTube channel.